Ionization energy can only be explained in gaseous states. The concept of ionization energy for solids and liquids is not applicable. Screening effect or shielding effect. Remember one thing, 2s and 2p represent one shell. Main condition which are required for the formation of ionic bond. Number first condition is ionization energy. Ionization energy means the amount of energy which is required to remove the electron from an isolated gaseous atom is known as ionization energy. इसके बाद मैंने ये भी बताया था, ionization energy can only be explained in gaseous state for solids and liquids. The concept of ionization energy is not applicable. This concept is applicable only for gaseous state. Now the question is, if we take the example of ionization energy and we will compare the different types of ionization energy and find out the suitability of different metals also. First thing, before we discuss ionization energy, two important factors plays an important role. Number first is effective nuclear charge and number second is screening effect. Number first is nuclear charge, number second is screening effect. Two concepts are used here. Number first is called screening effect, and this screening effect is also called as shielding effect. Screening effect or shielding effect. And second effect is effective nuclear charge. These are the two factors on which ionization energy depends. Number first is screening effect or shielding effect. Remember one thing, in case of multi-atomic atom, in case of multi-electronic atom, multi-electronic means which contain more than one electrons. देखा गया कि जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन और दे एक्ट एज शील्ड टू आउटरमोस्ट शेल एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, if we take the example of an element and name of the element is magnesium and magnesium atomic number is 12 और आप लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 इसके बाद 2p6 and 3s2 and 3s2. Remember one thing, the shells which have high principal quantum number, the shells which have more value of principal quantum number, that shall act as outermost shell, that shall act as outermost shell. मान लो यहाँ पे 1s2 भी है ना, दिस इज फर्स्ट शेल एंड 2s and 2p. सिंस ये भी आप जानते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स. इसका मतलब ये है कि 1s रिप्रेजेंट वन शेल एंड 2s and 2p रिप्रेजेंट वन शेल एंड 3s रिप्रेजेंट नेक्स्ट शेल. अब सवाल है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. और आप लोग जानते हो कि फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, group number second and group number 13, valency depends upon number of electrons present in outermost shell. And you also know, if an element have 1 2 and 3 electron in its outermost shell, that element is said to be metal, that element is said to be metal. अब सवाल है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो that means magnesium, in this case magnesium is metal. Number second point, since the outermost shell contain 3 electrons, 2 electrons, and next shell 2p shell and 3s2, these contain 6 electrons. मान लो if we take the example of magnesium, magnesium atomic number 12 means how many proton it contain? 12 protons. इसके बाद आगे देखो 1s2, इसके बाद 2s2 और इसके बाद 2p6 और इसके बाद 3s2. तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो 3s2 and this shell is also called valence shell or outermost shell. इसके बाद जो नेक्स्ट शेल होती है and that next shell is 2p and 2s. 2p contain how many electrons? 6 electrons. 1 2 3 4 5 and 6. In the same way, next one is 2s
and 2s contain how many electron? 2 electron, and 1s contain 2 electron. Now since nucleus is present on the center and there is always force of attraction between electron and nucleus, that force is called a nuclear force of attraction. Nuclear force of attraction. Nucleus always attracts the electron towards itself. Now the question is, since electrons are negative charge, electrons have negative charge, and outermost shell also contain electron which have also negative charge. आउटरमोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है? नेगेटिव। और ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2p के अंदर, और 2p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी चार्ज क्या है? नेगेटिव। देयर इज अ रूल लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर and opposite charges attract each other. As a result, these 2p electrons will produce repulsion on outermost electrons. Remember one thing, shielding effect is applicable only when inner electron repel for outermost electron. पता inner electron है ना 2p6 और इसके बाद है 3s2. 2p6 electron provide repulsion to 3s2 electron. As a result, जरा मुझे बताओ इससे क्या होगा? Size will increase. Size will increase. Repulsion increase, size will increase. Remember one thing every time, very important point for MCQ, important point for NEET point of view. As the value of n increase, as the value of n increase, energy decrease, energy increase. As the value of n increase, energy increase, and also attraction decrease. Attraction decrease. If you apply this concept, you can solve number of questions, number of objects in case of competitive exam point of view. First point क्या याद रखना है? As the value of n, n का मतलब क्या है? Principal quantum number. As the value of principal quantum number increase, बताओ एनर्जी का वैल्यू भी क्या होता है? Increase. The value of energy also increase. When the value of energy increase, attraction decrease. Attraction decrease. As the value of n increase, energy increase and attraction decrease. As the value of n decrease, energy decrease and also attraction increase. रिवर्स याद रखना है। और इसके बाद ऊपर MTR, मुझे तो रटो MTR मुझे तो रटो, n is increase, E increase, attraction क्या होगी? डिक्रीज। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि n का वैल्यू कम होगा, if the value of n is less, energy will always less and attraction will more. Attraction will more. As the value of n increase means number of shells increase, distance increase, since principal quantum number provides us information about the distance. As the value of increase, बताओ n का वैल्यू क्या है? 3 के बराबर, और n का वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। इसका मतलब है कि n का वैल्यू इंक्रीज हुआ ना, attraction will decrease, and if attraction will decrease, energy will increase. Energy will increase. That means the electron which are present in 3s2, they have more energy as compared to electron which are present in 2p6. अब सवाल है कि जो रिपल्शन प्रोड्यूस होती है 2p इलेक्ट्रॉन और 3s इलेक्ट्रॉन, इसी इफेक्ट का नाम क्या पड़ा है? शील्डिंग इफेक्ट। तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट डाउन, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, in a multi-electron atom, the repulsion produced by, in a multi-electron atom, the repulsion produced by innermost electron, repulsion produced by innermost electron on outermost electron, on outermost electron is known as shielding effect or screening effect. Next, as the value of principal quantum number increase, as the value of principal quantum number increase,
as the value of principal quantum number increase, the distance between the nucleus and outermost electron increase, due to which attraction decrease and ionization energy also decrease, and vice versa जानते हो। अब आगे देखो, as the value of screening effect increase, one is the value of screening effect increase, पता अट्रैक्शन कम होती है ज्यादा, अट्रैक्शन डिक्रीज। मान लो 12 प्रोटॉन्स, फर्स्ट शेल 1s2, इसके बाद 2s2, और इसके बाद 2p6, और इसके बाद 3s2, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखो, इसके बाद मैंने कहा था एज द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, बताओ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है इंक्रीज, डिक्रीज। और आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? The amount of energy which is required to remove the outermost electron from isolated gaseous atom, means as the value of attraction decrease, less energy is required to remove the electron from isolated atom. तो हमेशा याद रखना, whenever the screening effect increase, screening effect is inversely proportional to ionization energy. Very important now. Screening effect is inversely proportional to ionization energy. As the value of ionization energy increase, screening effect decrease, screening effect decrease. अब यहां से पता चला कि screening effect है क्या। याद रखो, ये जो screening होती है ना, screening, there are two types of screening. There are two types of screening effect, or there are two types of shielding effect. One is poor shielding and number second is effective shielding. How many types of shielding are? Two. Number first is poor shielding and number second is effective shielding. Depending upon the nature of subshell, shielding effects are of two types. First आप लोगों ने देखा shielding effect है क्या। Number second, depending upon the, you can write this, depending upon the nature of subshell, depending upon the nature of subshell, subshell का nature क्या है? That means subshell may be S, it may be P, it may be D, or it may be F. Depending upon the nature of subshell, screening effect or shielding effect are of two types. Number first is poor shielding and number second is effective shielding. Number first is poor shielding and number second is effective shielding. Depend upon the nature of subshell. Subshell का nature क्या है? S है, P है, D है, F. Remember one thing, shielding effect are of two main types. Number first is poor shielding and number second is effective shielding. Most important MCQ from the NEET point of view, the order of shielding effect for different subshell is order of, important now, this question was repeated number of times, order of shielding effect of different subshells, order of shielding effect of different subshells. Always ये order याद रखना, S, इसके बाद P, और इसके बाद D, और इसके बाद F. Order of shielding effect. And remember one thing, S and P and number second is D and F. S and P always show effective shielding. S subshell and P subshell always show effective shielding. And number second D and F जो है they always show poor shielding. अब सवाल है कि सर shielding effects are of two types. Number first is poor shielding and screening shield. So poor shielding and effective shielding. From the NEET point of view आप लोगों को इतना याद रखना है कि order means S, P, D and F.
most shielding, most out of subshell we show most effective shielding, that is S, इसके बाद P और इसके बाद D और इसके बाद F. अब सवाल है कि सर पुअर शील्डिंग और इफेक्टिव शील्डिंग का मतलब क्या है? इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ S, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ S, और आप लोग जानते हैं जो S है, S orbital is spherical in shape. S orbital is spherical in shape. S, very important conclusion about S. S means effective, or S subshell is spherical in shape. S orbital is always spherical in shape. And number second, S subshell or S orbital is non-directional. Since sphere does not have direction, sphere के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, इसलिए जो S orbital है, S orbital is non-direction. और सबसे important point about S subshell, that is it always forms sigma bonds. It always forms sigma bonds. It does not form pi bond. D orbitals, F orbitals and P orbital, they can form pi bonds, but S orbital is only one orbital which always forms sigma bonds. और ये भी याद रखो, सिग्मा बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. आगे बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है. ओवरऑल आपको याद रखना है जो एस है ना, एक तो ये स्फेरिकल है. स्फेरिकल का मतलब है कि जिसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं हो. जब स्फेरिकल है, दैट मीन्स इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियस एंड फर्स्ट शेल कंटेन एस, एस मीन्स इट स्प्रेड थ्रू आउट द न्यूक्लियस. Throughout the nucleus means it shield nucleus in all side. Since it not directional, sphere के पास डायरेक्शन ही नहीं है, इसलिए याद रखो कि it shows shielding to nucleus in all side. That is why जो S है, S show much more shielding effect. S show much more shielding. Getting my point or not? S show much more shielding. Why? Because S is spherical and number second it is non-directional. Electron density is present throughout and it is not present in one side. Getting? Yes, sir. Next is P. और P की शेप जो है आगे बताऊंगा. P is dumbbell. P is डम्बल. तो P की जो शेप होती है वो डम्बल होती है, और जो D होती है ना, D की शेप डबल डम्बल, और F की शेप होती है कॉम्प्लेक्स. अब सवाल है कि if we take the example of F and D, since these orbitals have diffuser shape, as a result they do not show much more shielding. Poor and effective shielding में क्या फर्क है? If electron produce more repulsion to outermost electron, बताओ इस इफेक्ट का नाम क्या होगा? Effective. लेकिन इसके बरअक्स if we compare poor shielding, in case of poor shielding, electron does not shield much more as compared to effective shielding. अब यहां से पता चला, जरा मुझे बताओ, if मान लो MCQ के अंदर आप लोगों को पूछा गया एक एलिमेंट के पास पुअर शील्डिंग होती है, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम है या ज्यादा? आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इज कम. नंबर सेकंड, मान लो आपसे पूछा गया इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट एंड एलिमेंट हैव इफेक्टिव शील्डिंग, देन एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस और मोर. इज मोर. ऑलरेडी मैंने बताया था एज द वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, साइज इंक्रीज. मान लो आपसे पूछा गया कि इफ वी हैव टू एलिमेंट, मान लो हमारे पास ए भी है और बी भी है, बी के पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम है या ज्यादा? कम. और बी के पास शील्डिंग इफेक्ट कम है, पुअर शील्डिंग, इसका मतलब ये है ना अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर. ओवरऑल आपको याद रखना है शील्डिंग इफेक्ट आर ऑफ टू मेन टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज पुअर शील्डिंग एंड इफेक्टिव शील्डिंग. पुअर शील्डिंग मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी एंड एफ. When electrons are present in D and F, they always show poor shielding. And when electrons are present in S and P, they always show effective shielding. अब overall आप लोगों को summary, you have to remember one out of summary in this lecture, that is if the value of screening effect increase, ionization energy decrease and attraction decrease. बाकी सुनिए इसमें सॉरी बकवास हो यार, कहीं तो हंस हो यार. शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, अट्रैक्शन डिक्रीज. नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज,
ionization energy increase and attraction increase. Attraction increase. And third point, 1 second, third point, out of S इसके बाद P और इसके बाद D और इसके बाद F. ऑर्डर हमेशा याद रखना, S P D N F. दिस इज ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट. और यहां पे भी एक और पॉइंट ऐड करना, D and F ऑलवेज शो पुअर शील्डिंग एंड नंबर सेकंड, एंड S and P ऑलवेज शो इफेक्टिव शील्डिंग. और इसके बाद यहां पे लिख सकते हो S means it is spherical and it show much more shielding effect. It is spherical and it show much more shielding effect. So this is all known as what is shielding effect.